Hello to all of you. Today, let's we start transporting plants. What do you mean by the transport? ट्रांसपोर्ट जैसे कि आप सभी लोग कोई भी व्हीकल यूज़ करते हो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाने के लिए, सेम लाइक दैट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो भी कुछ प्रोडक्शन होती है, फ्रूट्स बनते हैं, वेजिटेबल्स, लीव्स, वो अपने आप उनका वो कंज्यूम नहीं करते, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कंडक्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं। दैट इज नोन एज द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट मीन्स टू कैरी ए थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वन प्लेस टू अनदर, इट मीन्स if product is formed in the leaves but whole the plants need the food, in that case food transport to whole the parts of the plant, that is known as the transport. Other word also can use dislocation. It means एक चीज एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे चले जाएगी, that is known as the dislocation. डिसलोकेशन एक मैन्युफैक्चरिंग साइट है जहाँ पे प्रोडक्ट्स बने हैं, और एक रिक्वायरमेंट साइट है जहाँ पे चीज़ की रिक्वायरमेंट है। मैन्युफैक्चरिंग साइट से जब वो रिक्वायरमेंट साइट्स पे जाएगी, दैट इज नोन एज द डिसलोकेशन. इट मीन्स चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ए सब्सटेंस कैरी फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग साइट टू रिक्वायरमेंट साइट इज नोन एज डिसलोकेशन. इफ that food particles not be circulate to whole the plants, then not all the parts can get the energy to do work, and they will be धीरे धीरे वो क्या होंगे, लीव्स सूख जाएंगी, ब्रांचेस सूख जाएंगी. पानी हम कहाँ देते हैं? पौधे की जड़ों में. अगर वो पानी पूरे पौधे को नहीं मिलेगा तो पौधा सूख जाएगा. इसीलिए क्या जरूरी है? ट्रांसपोर्ट. डिसलोकेशन, एक चीज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चले जाएगी, दैट इज नोन एज द ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में देयर आर टू कंडक्टिंग टिश्यू दैट कैरी वाटर एंड मिनरल्स एंड आल्सो फूड फ्रॉम लीव्स टू होल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. मेनली प्लांट्स हैव टू कंडक्टिंग टिश्यू. Why they requirement mainly only two conducting tissue? Because plants need water. First tissue is xylem. Xylem which carries water and minerals. हम पौधे में पानी कहाँ देते हैं? रूट्स में, जड़ों में. और वो रूट्स एयर वाटर को एब्जॉर्ब करके हमारी लीव्स तक पहुँचा देते हैं. दैट इज द फंक्शन ऑफ xylem which carries water and minerals. Xylem have mainly four components, made by only four components. You already studied in class 9. 9th क्लास में आप सभी ने पढ़ा था कि जाइलम के मेन 4 पार्ट्स होते हैं. कौन से होते हैं? जाइलम, जाइलम फाइबर, जाइलम वेसल्स, ट्रैकीड्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा. Now in 10th class we are studying about in the detail. Xylem mainly have 4 components. First one is xylem vessels, second is tracheids, third is xylem parenchyma, fourth one is xylem fibers. Xylem vessels, vessels like a container. That vessels is a tube-like structure, that is a hollow tube-like structure like a drain pipe in which water can be easily transported. That is, there is a cell wall, that is a cell wall. These areas, thin areas is known as the pits. Space containing no cytoplasm, because plants made by cytoplasm, there is no cytoplasm. That's why it is a hollow pipe. These wall-like structures are known as xylem vessels that function to conduct the water from one point to the another like a drain पाइप. जैसे हमारे घरों में पाइप होते हैं, पानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चला जाएगा. सेम लाइक दैट प्लांट्स में हम पानी देते हैं रूट्स में. रूट से पानी सक्शन पंप के थ्रू ऊपर की तरफ जाता है एंड गो टू द लीव्स. लीव्स को पहुंच जाएगा. दैट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम वेसल्स. सेकेंड वन इज द ट्रैकीड्स. ट्रैकीड्स क्या है? ये सिलेंड्रिकल शेप की, एट द एंड्स ऑफ टेपरिंग एंड इन सेंटर इट इज थिक इन वॉल.
छोटे छोटे से होल्स हैं. These holes, these thin areas of cell wall, that is known as pits. What do you mean by the pits? Pits are the small openings present on the cell wall where are no cytoplasm will be deposited, that are known as the pits. Pits are small thin areas of the cell wall where no lignin has been deposited. What do you mean by the lignin? Lignin, it is a chemical substances that increase the thickness of the plant. Secondary substance that increase thickness of plant. Other name of it, secondary tissue, that is also known as cambium. Secondary tissue, secondary tissue also known as cambium. Which tissue responsible for the thickness of the plant? Yes, which tissue? I told you that cambium. Also we can say chemical substances, lignin, that is responsible for the thickness of the plant. Next one is the xylem parenchyma. Parenchyma, you already studied about that. Parenchyma have the food vacuole that help to store the food. Xylem fibers, fibers क्या करते हैं? फाइबर्स हमारी बॉडी में टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ. सेम लाइक दैट प्लांट्स में जो फाइबर्स होंगे वो क्या करेंगे? प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे. So there are 4 type of xylem component: xylem vessels, trachees, xylem parenchyma and xylem fibers. That is the structure of xylem vessels and xylem trachees. Parenchyma and fibers already within these diagrams. That's why no need to draw these diagram separately. Parenchyma to store the food and fibers to provide strength to the plant. Now we are going towards the phloem, second conducting tissue. Phloem is the second conductive tissue that carry food from leaves to all the parts of the plant. Those conductive tissue which carry food from leaves to all the parts of the plant, that are known as the phloem. Phloem also have 4 parts mainly. First one is cilia plate, cilia tube, companion cell, phloem parenchyma and fibers. That is the structure for the phloem. In phloem there are these plate-like structure. These are the perforated plate that is in broken form. It is tube-like structure that is known as the cilia tube. That is companion cell. Cilia plate help to pass food particles from one side to the another part, and again it will be passed from this perforated area and go to all the parts of the plant. Cilia tube, these are the tube-like structure that carry the food from one part to the another. Companion, it provide company to cilia tube that help to conduction of food to all the parts of the plant. And phloem fiber and phloem parenchyma, that function is same always, that provide the strength to the plant and store the food. That is the complete structure of phloem. What is the function of phloem? Phloem carry food from leaves to all the parts of the plant. Clear to all of you? Now let's study about how can water and minerals transport in plants. Next topic is mechanism of transport of water and mineral in. How can water and minerals transport from roots to leaves? Because हम लोग पानी कहाँ देते हैं पौधों में? रूट्स में, जड़ों में, और वो पानी धीरे धीरे पूरे स्टेम्स के थ्रू लीव्स में पहुंच जाता है. That is the mechanism of transport of minerals. Like that, these are the roots. These are root hairs. These root hairs. These are the soil particle. Soil particle. These are the root hair. Root hair. There are soil particle. Soil particle
absorb the water. They have the layer of water, that is also known as film of water. Root hair absorb the water from there and pass to the root cortex. There are root cortex is known as xylem and phloem. These are the conductive tissue. These are the endodermis, inside cell, and these are the exodermis outside. There are two cells, exodermis and endodermis. Between that there are root cortex, conductive tissue are present. After that water pass to the xylem vessels. These are the xylem vessels. Drain pipe like structure. I already told you that xylem vessels is a drain pipe like structure that carry water from the roots and pass from root cortex into xylem vessels. This is a drain pipe like structure. That is a hollow pipe where water start to move inside the stem. That is xylem stem, that is present in stem. After that it will be passed to the leaf. There are a leaf xylem and water pass to hold the body. Which process are involved in it? Firstly, what happened? Transpiration. Have you heard about the transpiration? Have you know about the transpiration? Yes, transpiration. Loss of water in the presence of सनलाइट. जब भी सनलाइट होती है तो एक्स्ट्रा वाटर स्टोमेटा के थ्रू स्ट्रीम बन के उड़ जाता है. दैट प्रोसीजर इज नोन एज ट्रांसपीरेशन. लॉस ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. जब वाटर बाहर जा रहा है देयर विल बी ए प्रेशर क्रिएट इनसाइड द प्लांट. दैट प्रेशर इज नोन एज सक्शन पंप. दैट प्रेशर स्टार्ट टू पुल अपसाइड टू होल्ड द वाटर. पूरा का पूरा वाटर क्या होगा, ऊपर की तरफ खींचने लग जाएगा. जब पूरा वाटर खींचेगा तो एक प्रेशर अप्लाई होगा जो पूरे वाटर को रूट से लीव्स में खींचेगा. दैट इज अ सक्शन पंप क्रिएट. ड्यू टू ट्रांसपीरेशन देयर आर ए स्मॉल ओपनिंग present in the leaves. That small opening is known as a stomata. There are small opening that is known as stomata. Through stomata transpiration will be occur, where in the presence of sunlight water go outside. That create a pressure. Due to this pressure water start to pull upside, and that is a mechanism of transport of water and minerals. कि रूट से लीव्स में वाटर कैसे जाएगा, पानी कैसे पहुंचेगा. एक प्रेशर क्रिएट होगा जिसकी वजह से धीरे धीरे पानी ऊपर की तरफ खींचेगा. उसे हम कहेंगे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? If you have any problem, you can write your problem in your comment box. Thank you.